So good evening all of you. कल के जो नोट्स है उसमें एक करेक्शन करो, जो सेक्शन 8 सब सेक्शन 3 है ना, वो है सब सेक्शन 4. रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में एक जगह लिखाया था ना सेक्शन 8, ये है सेक्शन 8 पॉलिटिकल डेमोक्रेसी था ना जहाँ पे, ठीक है. फिर मैंने केस लिखाया था लिली थॉमस, तो उसका ईयर लिख लो, कल नहीं मुझे याद था, 2013 पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जहाँ पे लिखा था, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जहाँ पर प्रिएम्बल्स के आइडियल्स थे ना. लिली थॉमस केस ही था ना, तो लिली थॉमस केस का ईयर 2013. कल वो सडनली आया, दैट्स व्हाई आई डिडंट रिमेम्बर. ठीक है, आपको एक कंफ्यूजन? हाँ कोई बात नहीं, लास्ट में जो कहते हैं वही. ये करेक्शन कर लिया. अच्छा, और वो ब्रुकिंग्स की रिपोर्ट थी, तो अकॉर्डिंग टू दैट नाइजीरिया फर्स्ट, इंडिया सेकंड एंड कॉन्गो थर्ड. तो हाँ, वो लार्जेस्ट नंबर ऑफ पुअर्स, तो वो ब्रुकिंग्स रिपोर्ट में था, तो लिखा है ना. तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ पुअर्स मतलब फर्स्ट नाइजीरिया, सेकेंड इंडिया, थर्ड कॉन्गो. अच्छा, यू हैव रेड द स्पीच, यू मेड नोट्स. अम्बेडकर ब्रुकिंग्स एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, ब्रुकिंग्स का रिपोर्ट है, ठीक है. नाउ यू रेड अम्बेडकर्स स्पीच, तो वन बाय वन टेल मी द की पॉइंट्स इन दैट पर्टिकुलर स्पीच. ओके, तो what was the occasion of the speech in the Constituent Assembly? कब किया था? 25 नवंबर 1950, 25 नवंबर 1949, तो वन डे बिफोर. अच्छा, एक तो डेट था वो 25 नवंबर 1949. हाँ, तो क्या क्या आइडिया किसको मिला? वन बाय वन. तो अकॉर्डिंग टू यू कॉन्स्टिट्यूशंस whether they will work or not will depend on the people and the political parties they will set up. Don't, I'll ask you, tell. तुमने पढ़ा क्या और पॉइंट मिला? Okay, limit to the gratefulness of people means limit to the charisma, hero worship targeted against Gandhi. Yes, these are unconstitutional, of course. सत्याग्रह है, ये सब तो डायरेक्ट एक्शन है, and these are not constitutional. Constitutional methods क्या है? Through law which moderates were doing. और क्या है इसमें? Linkage between
Liberty, equality and are related. How and why? Huh? So liberty without equality. Equality एक तरीके का सोशल इकोनॉमिक जस्टिस हो गया और लिबर्टी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हो गया. तो compatibility between political democracy and social democracy leading to fraternity. और क्या points? हाँ? वो तो हो गया कैरिस्मा. हाँ? हाँ, in India we are entering into life of contradiction. Political equality but social and economic inequalities. Anything else? Okay, so one thing bad. Now that opportunity is not there, we cannot blame British. It will be our own fault. What else? Political democracy can be held without social Just a minute. तुम्हारा है political democracy cannot be without social and economic. अच्छा. You? तुम कुछ जल्दी में बोल गए. Working of the constitution depends on the people. Okay. Buddhist Sanghs with the parliament. Okay. Deliberative democracy. Document it should be the document of the living and not the document of the dead. So he says ki, the binding should be for yourself and not for the coming generations. Good. So constitution should be always a living document and should be amended as and when required. Yeah. Casteism is anti-national. How casteism is anti-national? Because casteism is against fraternity. Or fraternity is the idea on which nation is based. Creed above nation and the independence. Creeds above nation and independence. Creed above nation. Above nation and independence. Acha, greed of people above nation. So if you will think yourself or your interest above national interest can kill the independence. So anything else? Word of contradictions between political democracy and यही मेन थीम है उसका. Constitutionalism, constitutional morality. Constitutional morality was also given in this speech? No. चलो. तो अभी आज तुम लोग पढ़ोगे एक स्पीच. कौन सी स्पीच पढ़ोगे? पढ़ो पुतिन्स स्पीच. व्लादिमीर पुतिन्स स्पीच. Putin's speech at नाम भूल गए. कौन सी सिक्योरिटी डायलॉग होता है? अच्छा, पुतिन से बढ़िया आप मोदी स्पीच पढ़ो. मोदीज स्पीच एट शांग्रीला डायलॉग. ठीक है. सो एक पढ़ो, दोनों पढ़ो, ये तो बहुत छोटा सा ही है. पुतिन्स स्पीच एट म्यूनिक सिक्योरिटी
Conference 2007. ये दोनों स्पीच, इसमें क्या क्या खास बात है कल बताना, ठीक है. So we are yet to, I told you about Indian secularism, some features. No complete separation, it is called as principled distance, this much. Now, which provisions of the constitution deal with secularism, right? Which provisions of the constitution deal with secularism? तो बेसिकली फंडामेंटल राइट्स, ठीक है. तो बेसिकली फंडामेंटल राइट्स, all fundamental rights, for example, Article 14 deals with secularism, Article 15, 16, 17, okay. Then which other articles, wherever there is written like minorities, religious freedom, तो fundamental rights में मेन आइडिया है बिसाइड्स इलेक्शंस, जिसमें वी हैव एबॉलिश्ड सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट एंड हैव इंट्रोड्यूस्ड द जॉइंट इलेक्टोरेट. नाउ ऑन इंडियन सेक्युलरिज्म, एनीथिंग दैट यू फाइंड इज कंफ्यूजिंग or you have a clarity on Indian secularism? Right, one more thing, right, Indian secularism is also called as positive secularism. So principled distance and positive secularism. So positive secularism means based on the idea of positive liberty, right? Based on the idea of positive liberty. तो positive liberty क्या होता है? Freedom not just in the absence of state, but it can be also in the presence of the state. So when a state intervenes in the religion, it does not mean that it is anti-secular. ठीक है? So we look at the positive relation between religion and state. So can the teaching of religious scriptures permissible? Will it contradict the secular nature of Indian state? Suppose Gita is taught, will it contradict? No, because our secularism is positive secularism, not negative secularism. Is this clear? So positive secularism means a state can use religion in the positive sense. So it doesn't make any difference if even in the government schools Gita is being taught. So there is no complete separation. That is based on whose ideas? Gandhi's idea of secularism. So now this part, yeah. कौन? What is pseudo secularism? अच्छा, ये तुमने लिखा पॉजिटिव सेक्युलरिज्म, इसका मतलब लिख लो, राइट राइट. एज पर सुप्रीम कोर्ट, एज पर सुप्रीम कोर्ट, write the name of the case Aruna Roy, ARUNA, Aruna Roy case, comma, right, it will not impact the secular nature of Indian state if religious books are taught in schools, including government schools.
अब यहाँ पर लिखो राइट, अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट इंडियन सेक्युलरिज्म इज अ ब्रिज comma that ensures coexistence among the followers of different religions. Among the followers of different religions. So I think now he asked what is pseudo secular. Likho, what is pseudo secular? Right, the term pseudo secular is used by Hindu rightist groups, comma, right, primarily associated with Lal Krishna Advani, LK Advani, right. He called Indian model. So yeah, he called the model found in the Constitution as pseudo-secular on following grounds. Following grounds, pseudo-secular on following grounds. ठीक है, तो मेन है राइट, फर्स्ट एब्सेंस ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड, एब्सेंस ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड. सेकंड राइट, स्पेशल राइट्स फॉर माइनॉरिटीज. ठीक है, यही दो मेन रहे. अब लिखो वाई ही कॉल्स इट, या व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द रीजन, राइट. द अबव concept of secularism is based on the Western / European concept of secularism. For example, in France, ठीक है, right, right, in these countries uniform civil code exists. Next, right, no special rights. ये बेसिकली वेस्टर्न मॉडल को सेक्युलरिज्म का आइडियल मॉडल ये लोग मानते हैं. इनका नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट भी कहाँ पर बेस्ड है, यूरोपियन कॉन्सेप्ट पे. तो इनके हिसाब से दैट स्टेट इज नॉट सेक्युलर which makes differences among citizens on the ground of religion. And for India to become a secular state, uniform civil code is required. Okay, so the question is Indian model pseudo secular? The model found in Indian constitution, you will call it pseudo secular? No. Then what will you say? It is a sui generis model. ठीक है, राइट. तुम क्या लिखोगे, राइट, नोट करके लिखो. इन राइट, इट इज रॉन्ग टू कॉल
Indian model as pseudo-secular, it is sui generis, SUIGENERIS, sui generis means it evolved in a specific situations. Okay? और हमारा जो मेन आइडिया क्या है सेक्युलरिज्म का, इज एक्चुअली मल्टीकल्चरलिज्म. ठीक है, तो लिखो व्हाट इज द मेन थीम, व्हाट इज द थीम ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म. मेन थीम ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म, right? Instead of universal citizenship, it is based on multicultural citizenship. Multicultural citizenship. Universal citizenship मतलब when all citizens have same rights. Multicultural citizenship मतलब according to the different religions and customs you have given those rights. तो अपना historical condition से determined होता है. And instead of, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं है, वी बिलीव इन दिस आइडिया. एंड इंस्टेड ऑफ सेपरेशन, द आइडिया इज पॉजिटिव सेक्युलरिज्म एंड स्पिरिट ऑफ टॉलरेशन. एंड देयर वाज नो नीड, जस्ट लाइक देयर वाज नो नीड फॉर अस टू फॉलो वेस्टर्न मॉडल ऑफ फेडरलिज्म, सिमिलरली नो नीड टू फॉलो द वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म. Goa, that tradition has been there since the time of Portuguese. So it is already there and nobody demanded any change, so it is continuing. Is this clear? If uniform civil code, no problem. If it does not exist, then also no problem. Then it is easy for everyone now to have a uniform civil code. Why uniform? Uniform civil code does not make a country secular. Secularism means what? Why do you need a country to be secular? So that the persons who are in minority, they should not suffer because they are in minority. तो ultimate idea, अगर all people belonging to one religion है, so even if state is not secular, how does that matter? State is secular is required when people belonging to different religion coexist. And especially who will suffer from insecurity? Minority. So idea of secularism is to protect the religious minorities from the persecution by majority. And obviously when democracy will be there, the state will be majoritarian. Majority will have a say, minority will not have a say. तो जब सेक्युलरिज्म का आइडिया ही प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज है, तो अपना मॉडल तो और बेटर मॉडल है ना, रादर देन द यूरोपियन मॉडल. That too I will discuss. This you have understood? So yesterday I gave you one question, 2-3 questions. One was this one, discuss the values which are integral to secularism. इस क्वेश्चन को पहले करो. या कंट्रोवर्सी ट्रिपल तलाक पे नहीं है, कंट्रोवर्सी ट्रिपल तलाक बिल पे, और कंट्रोवर्सी बनाई गई है यूनिफॉर्म सिविल कोड पे.
वो तो आई विल डिस्कस अभी। पहले ये क्वेश्चन का आंसर बताओ। डिस्कस द वैल्यूज विच आर इंटीग्रल टू सेक्युलरिज्म। वैल्यूज विच आर इंटीग्रल टू सेक्युलरिज्म, ये क्वेश्चन दिया था मैंने। इंडियन, अच्छा, डिस्कस द वैल्यूज विच आर इंटीग्रल टू इंडियन सेक्युलरिज्म, ये लिख लोगे। कैसे स्टार्ट करेंगे? फर्स्ट लाइन यू जस्ट टेल। Okay. वैसे let us leave the introduction. You tell what are the values which are integral to Indian secularism. Human dignity. One is human dignity. Second is toleration. Third is multiculturalism. Fourth, protection of minorities. भी वो किससे related है? Human dignity पे। तो जैसे what are the values which are integral to Indian secularism, तो इसमें first point what you can write? Indian secularism is often considered as an ambiguous concept. Ambiguous, lack of clarity, ambiguous concept. हाँ भी बता रहे हैं, ambiguous concept मतलब introduction थोड़ा लिख सकते हैं. Next, right, at times criticized as pseudo secular, because it is not modeled exactly on Western European. ठीक है. Next, right, every country has its unique circumstances. Every country has its unique circumstances. And so can possess its own model. Next, Indian model incorporates some of the Western features like first, universal adult franchise, equality before law, religious neutrality, ब्रैकेट में लिख सकते हो आर्टिकल 15 क्लॉज 1, ठीक है, रिलीजियस न्यूट्रलिटी, ठीक है. नेक्स्ट, हाउएवर देयर आर सम इंडिजिनस फीचर्स right, special rights of minorities, next, positive secularism where where there is no complete separation, next, principled distance and not just
इक्विडिस्टेंस। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखो द वैल्यूज इंटीग्रल टू Indian secularism are first, respect for human dignity, pluralism, communal harmony, toleration, and multiculturalism. ठीक है, तो मेन वैल्यू तो ह्यूमन डिग्निटी है विच इज देयर। ठीक है, तो थोड़ा सा जीएस में फैक्चुअल और स्पेसिफिक और ऑब्जेक्टिवली लिखो आंसर। ठीक है, प्रैक्टिकली लिखो आंसर, ऑब्जेक्टिवली। अब अगर ये क्वेश्चन आता है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एक्वायर द सेक्युलर कैरेक्टर merely from the words in the preamble but from the collective reading of many of its provisions। ये क्वेश्चन कल बताया था, इसका आंसर कैसे, मतलब इसका थीम क्या है। लिसन, तुम्हारे में लिखा होगा ये क्वेश्चन, आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एक्वायर इट्स सेक्युलर कैरेक्टर merely from the words in the preamble but from the collective reading of the many provisions। अगर ये क्वेश्चन लिखा जाएगा तो इसका कॉन्टेक्स्ट क्या होगा? हाँ, 42nd अमेंडमेंट नहीं, बेसिकली द डिबेट, और देयर हैज बीन सम डिमांड्स और डिबेट to remove the word secularism as it is redundant. Okay, so still whether 42nd amendment introduced or not, it will not make any difference। ये वाला जो डिबेट है यही इसका मेन थीम है। तो आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एक्वायर इट्स सेक्युलर कैरेक्टर फ्रॉम द वर्ड्स प्रियम्बल। तो इसमें क्या क्या लिखोगे? फर्स्ट पॉइंट, हाँ है तो आर्टिकल 14। अरे तो कहीं तो है इक्वालिटी बिफोर लॉ। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एक्वायर, तो इसमें फर्स्ट लिखो राइट द मॉडल ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म has always remained a debated and controversial issue। ठीक है, debated and controversial issue। Second point, original constitution did not have the term secular in the preamble, right? It was added by 42nd Amendment Act, which was passed when emergency was in operation and opposition was behind bars। ठीक है, right, behind bars। Next, that time criticized as politically motivated, that time
criticized as politically motivated because even when the term secular was not inscribed, the Constitution has been secular in nature. Secular in nature. Next, right, the best place to locate secularism, yeah, secular features is part 3, comma, various set of rights, various set of fundamental rights. ठीक, right, next, once again there has been a controversy because because in the present government comma, the copy of a constitution was put by a particular ministry right, which didn't inscribe the term secular, claiming it as a original copy. Yeah, didn't inscribe, yeah, didn't mention the term secular. ठीक है, claiming it as the original copy of the Constitution. Right, certain sections defended the action, on the ground that it does not make any difference right. However, in case it was a willful omission by the government, willful omission, by neglect है तो ठीक है, omission by the government, comma, it can be, yeah, right, in willful commission, right, it cannot be considered as desirable, comma, though it does not make any difference yet it will lead to unnecessary uncertainty in the minds of minorities. Okay, right, when the term is explicitly mentioned
comma, it makes our commitment towards secularism more explicit. ठीक है, तो in case it is removed, it will do more harm than the benefit. Is this clear? अच्छा, तुम लोगों ने टेस्ट में पॉलिटी वाले क्वेश्चंस के आंसर ही नहीं लिखे मैक्सिमम लोगों ने? हाँ, ज्योग्राफी के आंसर्स लिख दिए सारे। पॉलिटी में क्या मुश्किल लगा था? टाइम नहीं था। ओके ओके, मुझे लगा कि वो तो एक्स वैक्स से इतने आसान क्वेश्चंस थे, डायरेक्ट थे। अच्छा, फर्स्ट सेकंड के बाद टाइम। ओके, मुझे लगा कि समझ नहीं आया क्या हुआ वाला क्वेश्चन। ठीक है, और कोई वर्क थे क्वेश्चन? तो रेस्ट, चलो नाउ let us see the debate on uniform civil code. लिखो debate on uniform civil code. यूनिफॉर्म सिविल कोड, इस पर तो ऐसे भी आ सकता है। तो द बेसिक थिंग, should India have uniform civil code or not? This is the basic question we should discuss, right? Should we go for uniform civil code or not? You think uniform civil code is needed? And we should go for uniform civil code. Okay, for and against. Anybody against also? You are against? Huh? Common civil code. अच्छा. India believes in unity and diversity. So we Unity. should address our diversity with unity. So in order to address it, we need to address all the cultures with open arms rather than closing our arms for those cultures. So Okay. it is a more peaceful way to deal with all अच्छा. चलो anyway, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड. Now the question is, when you talk about uniform civil code, why do we need uniform civil code? How it will help? This debate revolves around what questions? Whenever somebody says uniform civil code, the debate is on what? क्यों चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड? क्या होने वाला है उससे? हाँ, इक्वल लॉ, जैसे अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड की डिबेट होती है तो उसमें इश्यूज क्या रहते हैं? किसकी इक्वालिटी? माइनॉरिटी. तो यू वांट टू बी इक्वल विद माइनॉरिटी. तुम्हारे लिए एक सचर कमेटी बैठाए अब. यू वांट दैट? जेंडर इक्वालिटी. ओके, माइनॉरिटी की वैसी हालत खराब है, अपनी भी वहां पे पहुंचाना है तुम्हें. तो एक डिबेट है जेंडर इक्वालिटी. सेकेंड इज सेक्युलरिज्म. इसमें बीजेपी वाले लोग समझते हैं ये नहीं है तो इंडिया सेक्युलर नहीं है. और थर्ड का कोई खास लिंक नहीं है, लेकिन लोग अटैच कर देते हैं, नेशनलिज्म और नेशनल यूनिटी. तो इफ यूनिफॉर्म सिविल कोड कम्स, देन देयर विल बी greater national unity. You think it has anything to do with national unity? ये भी नहीं. Uniform civil code comes, it will make us more secular or less secular? Less secular. Because secular तो क्या है, एक debatable concept है.
कोई एक बीजेपी मॉडल है, एक कांग्रेस मॉडल है, ठीक है। तो कांग्रेस वालों के लिए लेस सेक्युलर, बीजेपी वालों के लिए मोर सेक्युलर। लेकिन डिबेट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंसर्न है वो है जेंडर इक्वालिटी, ठीक है। सो दीज आर द 3 basic issues, but this is the core issue for which uniform civil code is demanded by even the women organizations. Now, what is a uniform civil code? Uniform civil code means one law or all sections of the citizens are governed by the single law. That will be a uniform civil code. Now, what is our situation in India? Situation in India is for all category of citizens, there is a common criminal, common civil. Only what is not common? Personal law. And we have allowed different communities to live according to their customs and traditions. अब दूसरी problematic बात क्या है? Personal law, customs and traditions. They are also the part of freedom to practice religion. Practice religion. ये क्या चीज़ है? ये है fundamental right, enforceable, and its enforcement is itself a fundamental right. दूसरा क्या है? Uniform civil code is a directive principle, ठीक है। तो directive principle is not enforceable, nevertheless fundamental in the governance. Now, what does Article 42 says? If you see the language of Article 44, it says that a state shall endeavor. Endeavor means a state will take special efforts to create the conditions for the introduction of uniform civil code, ठीक है। State. So this particular issue, uniform civil code as an issue, it was discussed. It is not a new issue. It was discussed even in the Constituent Assembly. Okay. So in the Constituent Assembly, many women leaders like Hansa Mehta, Rajkumari Amrit Kaur, they wanted the introduction of uniform civil code. Even leaders like Nehru and Ambedkar. Ambedkar even presented Hindu Code Bill. So they were also in favor of uniform civil code. But from both the sides, or you can say from the, like, there was a opposition from the certain sections of Hindus. For example, Sardar Patel and Dr. Rajendra Prasad. They were the two main persons who didn't support the idea of state interfering in Hindu customs and traditions. Similarly, they were members in among the Muslim community also who did not support the uniform civil code
and ultimately the matter remained, neither it was completely rejected nor it was introduced, but left it on the directives. Why left it on the directive means it is to be imposed or it can be introduced somewhere in future, because at the time of formation of the constitution, the environment that was prevailing in the subcontinent was not conducive. So first of all, it was the responsibility of Indian state to work so that the trust develops among the different communities in India. That was the first condition. But unfortunately, the post-independence politics was not very different from the politics which was happening in the British time. We continued with the divide and rule, use of religion and caste, and this thing kept on becoming more and more severe. From 1990s we see the communalization trend has grown more. The distrust has grown more rather than reducing. So constitutional directive is there, but you have to understand the constitutional directive properly. What was also written, it was not just introduction of uniform civil code, but a state to create such conditions. Unfortunately, this has not happened. Okay, so even if you are trying to introduce uniform civil code now, government has to create the conditions which are conducive. Is this clear? नहीं है ना. आर्टिकल 25 सेक्युलरिज्म है, 27, 28 ये सब सेक्युलरिज्म है. यूनिफॉर्म सिविल कोड का सेक्युलरिज्म से संबंध था नहीं. यूनिफॉर्म सिविल कोड की डिबेट का नेशनलिज्म से भी कोई संबंध नहीं था. यूनिफॉर्म सिविल कोड हमेशा जेंडर जस्टिस से रिलेटेड इशू है. उसको एप्रोप्रिएट किया हिंदू राइटिस्ट ग्रुप्स ने. किस लिए एप्रोप्रिएट किया? क्रिटिसाइज करने के लिए कांग्रेस is going for policy of appeasement. Otherwise, it has no relation either with nationalism or with secularism. उससे कोई relation ही नहीं है उसका. और Constituent Assembly में जो debate था, वो भी किसके लिए था? Gender justice के context में था. Now, if you see the situation of personal laws during the time of British. So Britishers had codified the personal laws of Christians and Parsis. They tried to make an attempt for codification of the personal laws of Hindus and Muslims. And there was an opposition by Hindus at that time, that how come a alien government who does not know Hindu customs and traditions is going to amend the Hindu or is going to go for codification of law. Have you understood this? So if the government is alien, doesn't know my customs and tradition, and as a Hindu I don't accept that, same argument will lie that the government in independent India is represented, majority is Hindus in parliament. What percentage of the representation minorities have in the parliament?
Okay, so just like that time, we as a Hindu not accepting British efforts, how do you accept that the Muslims, when they are not represented, not even in proportion of their population, will be accepting Hindus reforming their customs and traditions? Okay. Now, the next thing is, uniform civil code actually means what? Uniform civil code is linked with secularism in the sense that how people will lead their life. This is also linked to the concept of sovereignty of the state. Okay? So in medieval time, there was a problem of church and king. So life will be governed by the laws made by the church or the state. So European development is what? Where they decided that the laws will be made by state. Okay? And this became the definition of their secular state. So basically, state make law will have supremacy even in matters of customs and tradition. ये western concept of secularism है. Those who are political science students, they must be knowing, मतलब जैसे Hobbes एक thinker है, उसने क्या कहा? Church is also under the state. So church can interfere, state can interfere in the matters of church. तो ये western concept है. Again, uniform does not mean one code for all. ठीक है? Uniform civil code issue is whether a state has a right to interfere in the customs and traditions and the religious laws. It is not about nationalism. It is about a state recognizing whether the church is different, separate, untouchable, or a state can interfere and change the customs and traditions. तो ये issue उससे linked है. If you see Article 25 Clause 2 Sub Clause A of Indian Constitution, it allows the state to, even if it is a uniform civil code not there, but it allows a state can interfere in the secular administrative matters. So there is no prohibition on Indian state from not interfering in the customs and traditions of minorities. And it is not that Indian state does not interfere. Indian state does interfere. Indian state has interfered, whether it is a legislature or it is judiciary. So there is a Muslim woman protection of rights on Divorce Act. Okay, so this renewed debate of uniform civil code started with the famous Shah Bano case, where Supreme Court has expressed its disappointment that the government has not done to go ahead with implementation of the uniform civil code or reforming the laws governing the Muslim section of the society. Now regarding Muslims, it's not that the law is not there, law exists. Okay? Regarding Muslims, there is Muslim Personal Laws, Shariat Application Act 1937 exists, which prohibits a state from interfering in the customs and tradition. But ये तो pre-constitution law है, ठीक है?
और आर्टिकल 13 क्या कहता है? प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ will survive only if it is not in contradiction with the present law. तो 1937 एक्ट गवर्नमेंट फॉलो करे या नहीं करे, ये गवर्नमेंट के डिसीजन पे डिपेंड करता है. दिस ऑल्सो डज नॉट प्रोहिबिट. ठीक है, तो इंडिया में स्टिल, और वॉट यू कैन नॉट से दैट द मुस्लिम्स हैव कंप्लीट फ्रीडम टू परस्यू देयर ओन लॉ. रियलिटी ऐसा है नहीं. नाउ द थिंग इज Muslim laws and Hindu laws. Indian state has reformed Hindu laws. Now even the Sikhs have their own separate laws. Christian and Parsis laws already reformed. Among Hindus, Jains, Buddhists and all are clubbed. Okay, so the only community that remains outside is Muslims community, but it is not completely outside. As and when the need arose, the government had intervened. चाहे वो शाहबानो केस हो, डेनियल लतीफ़ी केस हो या ट्रिपल तलाक केस हो. And when judiciary has said triple talaq is neither constitutionally tenable nor it is an integral practice of Islam. So it's not that state is not intervening. And this uniform civil code issue is like state having power to amend the laws. And what happens, why it start looking like uniform? It start looking like uniform because any state in India, any government in India can make law only which is as per the constitution. So directly or indirectly that law appears to be uniform because of the constitutional values. Okay. Now uniform civil code, because between Muslims and Hindus in certain aspects Muslim laws are anyway more advanced than Hindu laws. There was a need for Hindu laws to be reformed because the situation of women was much, or you can say worse, and at that point of time the need was not there because Muslim laws were already advanced. ठीक है, तो just for the sake of the satisfaction of certain sections of the society, if something is already fine, why do you want to reform? Nothing is perfect. So those certain areas where reform is done, that is anyway being in the process of. Okay, so this debate needs to be depoliticized, because when it gets politicized, the women issue gets sidelined. Women themselves get confused and divided, and nationalism and secularism and all these issues come up. ठीक है? If you see, compare Muslim laws and Hindu laws. अब Muslim laws एक और भी reason है why people want to change, because Hindus में you are allowed only one marriage और Muslims can do 4 marriage. तो जो हिंदू men हैं, ठीक है, तो उनको एक ये भी खुंदक है कि भाई हमारी दूसरी शादी नहीं हो सकती. Is this clear? अब दूसरी चीज़ क्या है? In among Hindus, second wife up till now had no legal status. Up till now, no protection. But among Muslims,
if 4 wives, then all wife have equal status. जो अब सुप्रीम कोर्ट चेंज कर रहा है इन केस ऑफ हिंदूज, तो अगर कोई चीज़ पहले से बेटर ही है तो उसको क्या रिफॉर्म करना है? उसको रिफॉर्म करके जो पहले से खराब है उसके लेवल पे लाना है. तो यू नीड टू हैव अ क्लैरिटी कि क्या चीज़ रिफॉर्म करना चाहते हो और कितना रिफॉर्म करना चाहते हो. कंप्लीट रिफॉर्म. अब कंप्लीट रिफॉर्म, इज इट रियली नीडेड? एंड just because you make or state make laws, does the status of women improves automatically? Hindus में तो है state made law. Is the situation of women improved in Hindus? And then there are a lot of discourses, because despite poverty, the sex ratio is better among Muslims. Though you say that the laws are backward. Have you understood this? So how politicized the entire debate is, and what exactly is Uniform Civil Code? Uniform Civil Code का basic मतलब ये है, state getting power to make changes in the personal laws. अब state can amend personal laws. ये तो वैसे भी एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी है और चीज़ें हो ही रही हैं. तो इस डिबेट का कुछ बेसिस ही नहीं है. इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इनिशियली सुप्रीम कोर्ट इन शाह बानो केस, सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस यूनिफॉर्म सिविल कोड. देन सुप्रीम कोर्ट रियलाइज्ड दैट इज नॉट नीडेड. तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट इज जस्ट evaluating a particular practice. If it is not in accordance to the constitutional principles or human dignity, they are changing. तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना जुडिशियल एक्टिविज्म था उसको टोन डाउन किया. इवन इन ट्रिपल तलाक केस सुप्रीम कोर्ट डिडंट आस्क that government should go and form the uniform civil code, but government itself has referred the matter to the law commission. Ab law commission's report was about to come, but again Supreme Court has accepted a petition for uniform civil code. तो अब सुप्रीम कोर्ट फिर से, सुप्रीम कोर्ट का भी अप्रोच इज फ्लक्चुएटिंग. So sometimes they direct the government, then it becomes judicial activism. Sometimes they act with restraint. So abhi the matter has become sub judice. Now because the matter has become sub judice, the law commission report cannot be, or law commission has said that if matter is sub judice, they will not give the report. ठीक है, you have understood this. तो बेसिकली दिस इज़ द इशू इन यूनिफॉर्म सिविल कोड. और ऐसा कुछ नहीं है कि स्टेट इन इंडिया डज नॉट इंटरफियर इन द लॉ. और जैसे शाह बानो केस के बाद मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन इन राइट्स एक्ट आया. दैट इटसेल्फ इज अ व्हाट? दैट इटसेल्फ गिव्स राइट्स टू मुस्लिम वुमेन. उसके बाद जुडिशरी ने उसको बहुत लिबरली इंटरप्रेट भी कर दिया है. तो ऐसा कोई बहुत बड़ा नीड नहीं अराइज होता. बट अमंग मुस्लिम्स देयर आर फ्यू प्रैक्टिसेस विच द मुस्लिम वुमेन, जैसे इन्होंने पिटिशन किया रिगार्डिंग 2-3 प्रैक्टिसेस. ट्रिपल तलाक का तो जजमेंट आ चुका है. 2 प्रैक्टिसेस और हैं. एक है पॉलीगैमी, दूसरा है निकाह हलाला. तो दिस दे से इट गोज अगेंस्ट ह्यूमन डिग्निटी. ठीक है, तो इसके मतलब लॉट ऑफ क्लाउड्स हैव टू बी क्लियर इन दिस पर्टिकुलर डिबेट ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड. तो तुम लोगों ने ऐसे कोई क्वेश्चन लिखा है क्या? नो. इसमें एक क्वेश्चन लिखो, राइट? लिखो, राइट.
examine the debate on uniform civil code in context of the issue of gender justice with respect to Muslim women. Gender justice with respect to Muslim women. ठीक है, अब सबसे पहले व्हाट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड लिखो. व्हाट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड? इसमें फर्स्ट पॉइंट ये है, इट इज ऑल्सो अ यूरोपियन कॉन्सेप्ट. ठीक है, यूरोपियन कॉन्सेप्ट है. नेक्स्ट, राइट, इन यूरोप right, nations have adopted the concept of universal citizenship. Comma, which also led to the adoption of uniform civil code right. The guiding theme was the protection of minorities. And to protect them from any sort of discrimination. ठीक है, discrimination, right? State will adopt the principle of religious neutrality. Comma, religion of a citizen will not be a criteria for the state. तो अब इस वहाँ पे यूरोप इज अ कॉन्टिनेंट और स्टेट स्मॉलर स्टेट्स हैं. अब इंडिया क्या है, सब कॉन्टिनेंट है. हैव यू अंडरस्टूड दिस? तो वहाँ की अपनी हिस्ट्री थी, रिलीजियस वॉर्स वेयर गोइंग ऑन, नेशन स्टेट्स वेयर फॉर्म्ड, तो माइनॉरिटीज इन एवरी स्टेट सम माइनॉरिटीज रिमेन्ड. तो ये डिसाइड हुआ कि रिलीजियस न्यूट्रलिटी एज अ प्रिंसिपल होगा और स्टेट के लिए रिलीजन विल नॉट बी अ कंसिडरेशन. तो सबके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड एंड यूनिवर्सल सेट ऑफ राइट्स. हालांकि इवन आज के टाइम में यूनिफॉर्म सिविल कोड इज इट एडिक्वेट इवन फॉर द वेस्टर्न कंट्रीज टुडे बिकॉज सिचुएशंस हैव चेंज्ड. तो वेस्टर्न कंट्रीज को भी अभी तो मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप अडॉप्ट करनी चाहिए रादर देन यूनिफॉर्म सिविल कोड. तो इंडिया फ्रेंच मॉडल अडॉप्ट करने का कोई सेंस ही नहीं है बिकॉज इंडिया शुड बी कंपेयर्ड विथ यूरोप नॉट विथ फ्रांस. एंड समथिंग विच इज नॉट प्रूविंग रेलिवेंट फॉर फ्रांस and France itself has to change.
Why do you want to put that redundant concept in Indian context now? ये समझ में आया? यूनिफॉर्म सिविल कोड. आप लिखो, राइट, द आइडिया ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड gets linked with first idea of secularism, second idea of nationalism. So what is important is your nation, not religion, and all will be following one religion. ये तो यूरोपियन कंसेप्ट है. Is this clear? तो राइट, इन प्रैक्टिस यूनिफॉर्म सिविल कोड implies state getting rights to intervene in the religious practices, customs and traditions. ठीक है. तो बेसिकली स्टेट इंटरवीनिंग एंड इट इज लाइक स्टेट मेकिंग पर्सनल लॉज, स्टेट मेकिंग रिलीजियस लॉज. ठीक है. अब लिखो व्हाई इट अपीयर यूनिफॉर्म. हाँ, और अपना यूनिटी डाइवर्सिटी है. अब लिखो व्हाई इट अपीयर्स यूनिफॉर्म. Right, since a state has to make law according to the constitution. ठीक है. comma, whenever a state will make law for any community comma, it has to be aligned with the values of constitution. ठीक है. राइट, हेंस दे स्टार्ट अपीयरिंग यूनिफॉर्म. और ओवरलैपिंग. ये बात समझ में आ गई? क्रक्स क्या है इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड के डिबेट का? क्रक्स क्या है? Indian state, can it interfere in the customs and traditions of Muslims and change it or not? और अगर इंडियन स्टेट चेंज करती है और इंडियन लॉ बनते हैं तो स्टेट कौन सा लॉ बना सकती है? जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हो. अब कॉन्स्टिट्यूशन तो एक ही है, तो अगर स्टेट किसी के लिए भी लॉ बनाएगी तो वो इसलिए वो यूनिफॉर्मिटी लगती है या वो ओवरलैपिंग लॉज लगते हैं. तो पूरी डिबेट का इशू है वेदर व्हेन स्टेट हैड मेड लॉज फॉर अदर कम्युनिटीज, व्हाई लेफ्ट फॉर मुस्लिम्स. इज दिस क्लियर? कैन इंडियन स्टेट मेक लॉ फॉर मुस्लिम कम्युनिटी ऑल्सो और नॉट? क्रक्स ऑफ द डिबेट ये चीज़ है. ठीक है. अब लिखो व्हाट आर द इश्यूज इन्वॉल्व्ड इन इंडिया. व्हाट आर द इश्यूज ऑफ डिबेट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट. व्हाट आर द इश्यूज ऑफ डिबेट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट?
फर्स्ट है जेंडर जस्टिस, सेकंड सेक्युलरिज्म, थर्ड नेशनलिज्म। ठीक है, राइट। हाउएवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट concern is gender justice or the rights of Muslim women. राइट्स ऑफ मुस्लिम वुमेन, ये मेन इशू है, बाकी तो ऐसे ही है। ठीक है, अब लिखो व्हाट वाज द अप्रोच ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, राइट। अ हाईली डिविसिव इशू, इट वाज अ हाईली डिविसिव इशू, डिविसिव, डिवीजन था, डिविसिव इशू, राइट। वुमेन लीडर्स लाइक हंसा मेहता, राजकुमारी अमृत कौर, modernists, modern like Nehru and Ambedkar, preferred uniform civil code. ठीक है, अब नेक्स्ट लिखो, इसमें नेक्स्ट राइट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, and some leaders from minorities were against. ठीक है, अब नेक्स्ट लिखो what is the provision in the constitution, what is the provision in the constitution. ठीक है, फर्स्ट आर्टिकल 44 जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल, राइट। स्टेट शैल endeavor, ENDEAVOUR, endeavor to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India. अब यहाँ पे अंडरलाइन करो shall endeavor, shall endeavor means shall take special efforts, it will take or it shall take special efforts. ठीक है, अब लिखो वाई, राइट राइट बिकॉज ऑफ पार्टीशन
comma, there was a lack of trust and hence it was not conducive comma, to introduce uniform civil code rather it was expected that government will work in such a way that the trust develops between the two communities. ठीक है, अब लिखो व्हाट इज प्रेजेंट सिचुएशन, मतलब एनवायरनमेंट इस तरीके का हो जाए कि लोग अपोज ही नहीं करें. ट्रस्ट होना चाहिए ना, नेशन है तो एक दूसरे में ट्रस्ट होना चाहिए. तो माइनॉरिटी को मेजॉरिटी में ट्रस्ट हो, मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में, तब जाके नेशन बनता है ना. तो वो है कहाँ, ठीक है. तो अब व्हाट इज द प्रेजेंट सिनेरियो. तो राइट देयर हैज बीन ग्रोथ ऑफ डिस्ट्रस्ट rather than trust. So if India is to become a modern rational country, there is nothing wrong, you can have uniform civil code, but there are some necessary requirements. Rather the situation has gone worse than what is existing in the initial decades. So the thing is, environment is not conducive to introduce uniform civil code. Is this clear? Now the question is, लिखो right, लिखो whether a state in India can intervene in the personal laws of minorities or not. Because why this question? Why this question? Point number 1, uniform civil code is a directive, comma, a non-enforceable part of the Constitution. Second point, Article 25, Clause 1, right, it gives all persons freedom of conscience, comma, practice, conscience या conscience, CONSCIENC, conscience, comma, practice, profess and propagate religion. फिलहाल अभी अपना काम केवल है फ्रीडम टू प्रैक्टिस, अंडरलाइन करो, फ्रीडम टू प्रैक्टिस. अब यहाँ पे लिखो, राइट, customs and traditions are part of freedom to practice religion.
and it is a fundamental right. ठीक है, अब लिखो इसका एक्सप्लेनेशन. अब ये सब जब लड़ाई झगड़ा डिबेट करते हैं, पूरी बात कभी बताते नहीं, ठीक है, और सारा पॉलिटिकल क्लास सारी बात नहीं बताता है, और लोग भी कभी कोशिश नहीं करते जानने की कि असली बात क्या है. तो फ्रीडम टू प्रैक्टिस प्रोफेस रिलीजन तो है, लेकिन it is not an absolute right. It is subjected to certain restrictions, public order, decency, morality. अब ये सारी चीज़ें वेग टर्म्स है ना, तो पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी. मोरालिटी का लिंक है ह्यूमन डिग्निटी से, तो स्टेट फिर भी रिस्ट्रिक्ट कर सकती है ना सर्टेन प्रैक्टिसेस. Certain practices, for example, nikah halala or triple talaq, if or even polygamy, if it appears that it is against human dignity, constitution does not prohibit. ये समझ में आया? अब इसमें लिखो explanation, right? Point number 1. फिर लिखो article 25 clause 1. Right, freedom to practice religion is not absolute. Right, it is subjected to following restrictions. First, public order. Second, morality. Third, health. ठीक है, मान लो ट्रिपल तलाक से किसी की हेल्थ ही खराब हो जाए, हाँ? ठीक है, कोई बीमार साइकोलॉजिकल पड़ गया. एनीवे, public order, morality, but it is a social health, morality, health, and चौथा भी है, and other provisions of part 3. Other provisions of part 3 में equality before law आएगा, उसका भी तो restriction है. For example, article 14. तो स्टेट को राइट था कि नहीं था लॉ बनाने में? तो स्टेट ने लॉ नहीं बनाया, इसलिए जुडिशरी को इंटरवीन करना पड़ा शाहबानो केस में. फिर तुम बोलोगे जुडिशियल एक्टिविज्म, लेकिन अगर अपना काम नहीं करोगे तो जुडिशरी विल हैव टू गो फॉर जुडिशियल एक्टिविज्म और नॉट. ये समझ में आए? तो जो प्रीवियस गवर्नमेंट्स थी, जैसे इफ यू टॉक अबाउट कांग्रेस गवर्नमेंट, तो कांग्रेस गवर्नमेंट हैव आल्सो नॉट डन व्हाट वाज परमिसिबल इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट और द डिग्निटी ऑफ मुस्लिम वुमेन. हैव यू अंडरस्टूड दिस? तो इन वन वे दे हैव गॉन फॉर अपीजमेंट पॉलिसीज, ठीक है, एट द कॉस्ट ऑफ gender justice and appeasement of the orthodox section of the society. It's not that there is no liberal section which doesn't want the reform. ये समझ में प्रोविजन था कि नहीं था, और ऐसे कुछ पता ही नहीं चलता, ऐसा लगता है ही नहीं कोई राइट. तो जुडिशरी अगर कर रही है या लेजिस्लेचर कर सकता है ना उसके बिना भी, तो इतना बड़ा इशू ही नहीं है, कोई हमने बहुत बड़ा अचीवमेंट कर दिया. इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन. अब नेक्स्ट लिखो आर्टिकल 25. ये तो किया होगा कल तुम लोगों ने, मैंने कहा था लिखने के लिए. आर्टिकल 25 क्लॉज 2 सब क्लॉज ए. नेक्स्ट,
nothing, लिखो nothing in this article shall affect the operation of any existing law or prevent the state from making any law regulating, restricting any economic, financial, political or other secular activity which may be associated with religious practice. अब मेंटेनेंस ऑफ मुस्लिम वुमेन इसमें आ सकता है कि नहीं आ सकता है? हाँ, आ सकता है ना। तो जबरदस्ती ऐसे सब डिबेट बनाया गया है, नहीं बना सकते, स्टेट तो बना ही सकती थी, तो कॉन्स्टिट्यूशन है। कहाँ पे तुम्हें स्पेशल राइट्स दिख रहे हैं? स्पेशल राइट्स सिर्फ कहाँ है? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। तो कल्चरल जो पहला वाला राइट है, ठीक है, उस वो तो सबके पास है ना, आर्टिकल 28, ठीक है, वो तो किसी भी सेक्शन हैज राइट टू कंजर्व इट्स लिटरेचर, कंजर्व इट्स लैंग्वेज, उससे कोई हार्म हो रहा है? दूसरा हार्म किससे हो रहा है? या दूसरा क्या है? माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस, उसमें क्या हार्म हो रहा है? तो मत पढ़ो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में। हाँ, हिंदूज के लिए नहीं है। वो अलग चीज है, दैट इज डिफरेंट। तो इन दोनों राइट से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। और तो ये जो सूडो सेक्युलरिज्म, कॉन्स्टिट्यूशन सूडो सेक्युलर है, इज दिस कंसेप्ट रॉन्ग और नॉट? ऐसा कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ऐसा रिस्ट्रेन है ही नहीं। स्टेट कैन मेक द लॉ as if it is any practice, but state had not made law, that is also a fact. Is this clear? So now let us see like this uniform, these two provisions you have understood. So now let us see the emergence of the recent debate. Emergence of the recent debate on यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, राइट। द रीसेंट डिबेट goes back to शाह बानो केस, नाइनटीन 1885, ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस शाह बानो केस? शाह बानो केस was also the case of triple talaq, ठीक है, and she was around 70-year-old lady, married for 40 years, 40 plus years, and her husband has given talaq, okay, and she wanted the maintenance, and as per the Muslim law the maintenance is given only till the iddat period. After that the maintenance is not the burden
of husband. तो अब क्या है, वो कम्युनिटी का कस्टम है. इज दैट क्लियर? और क्रिटिसिज्म से पहले तुम्हें कम्युनिटी का कस्टम समझना पड़ेगा, फिर कस्टम और प्रैक्टिस में डिफरेंस को भी समझना पड़ेगा. तो मुस्लिम कम्युनिटी में it becomes the responsibility of the family members of women, and if they are not capable, it becomes the responsibility of their waqf board. कि community as such, not husband's responsibility, means if not this way, that way, the system of maintenance do exist. But factual चीज क्या है कि from वक्फ board the maintenance had not been actually given. वो भी एक fact है. That also needed, that something has to be changed. But a custom is wrong is not there. You have to understand the custom because it becomes the responsibility. So she had applied for the maintenance as per Hindu woman, and the magistrate has ordered her husband to pay the maintenance like in case of Hindu woman. So that was fine, and her husband was also a lawyer, okay. And that time maintenance was just 250 rupees, 300 rupees under section 125 of CRPC, not more than that, but not ready to pay that much amount also, okay. So against the decision of the magistrate, ultimately appeal came to the Supreme Court. So Supreme Court has upheld the validity of the order of the magistrate. इतना सुप्रीम कोर्ट ने किया, ठीक किया, और सुप्रीम कोर्ट के पास पूरा राइट था. सुप्रीम कोर्ट ने अपने से एक एक्स्ट्रा काम और कर दिया कि भाई हमें बहुत अफसोस है, यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी तक लाया ही नहीं, लाना चाहिए, ठीक है. सो सुप्रीम कोर्ट हैज डायरेक्टेड टू इंट्रोड्यूस uniform civil code. Court's intention was not communal or to make it a political issue. The court's intention was improvement of the situation of the woman. It was a genuine, but since then the BJP had made it a issue that it is like anti-national, okay. So they had politicized the issue. So this judgment was very much welcomed by the women organizations, Muslim women organizations, even the liberal and modernist section of the Muslims. But it got so much politicized. This judgment was opposed by All India Muslim Personal Law Board. Now Muslims are also not a single community. There are different communities, there are different traditions. So that is an organization of Sunni Muslims. Though they are in majority, but it is not the representative of the entire community. So now again political calculations, because BJP had projected it as a victory of their stand. Okay, so Congress was about to be marginalized, and Congress vote bank has been primarily Muslims. So Congress, in order to appease the Muslims, brought a change in the law. Now this law is not very much against the interest of the woman, but in the political debates, we always forget what is exactly the system is. Is this clear? So this was Shah Bano case, so no need to write, but you can just write in Shah Bano case,
Supreme Court had upheld the order of the magistrate which permitted Muslim women to receive maintenance at par with Hindu women under section 125 of CRPC, Criminal Procedure Code, CRPC. Is this clear? Section 125. Now you write response of the government. Right. एक और इसमें लिखो, राइट, सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो डायरेक्टेड, सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो डायरेक्टेड द इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड. ठीक है, अब लिखो रिस्पॉन्स ऑफ द गवर्नमेंट. Muslim women protection of rights on Divorce Act, on Divorce Act 1986. अब इसके प्रोविजंस क्या क्या हैं? फर्स्ट प्रोविजन 1986. ठीक है, इसके प्रोविजंस क्या क्या हैं? फर्स्ट, सेक्शन 3(1)A, मतलब इतना ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है, बट फैक्ट जानने की जरूरत है. ठीक है, व्हाट डज इट सेज? सेक्शन 3(1)A, व्हाट डज इट सेज? राइट, reasonable and fair provision and maintenance reasonable and fair provision and maintenance to be made to the woman within iddat period, within iddat period. What? इद्दत पीरियड होता है एक टाइप का सेपरेशन पीरियड जैसे होता है, टिल द फाइनल डिवोर्स. 3 months का ऐसे कुछ पीरियड होता है, इद्दत पीरियड, जिसमें यू विल हैव टू पे द मेंटेनेंस. ये समझ में? हाँ, क्या? तो वो 3 months का एक पीरियड होता है आफ्टर डाइवोर्स. 3 months का एक पीरियड है, तब तक ही देना होता है. ठीक है, अब इसमें 3 महीने को ही देना होता है, उसके बाद तुम्हारे फैमिली मेंबर या फिर वक्फ बोर्ड देता है. ये समझ में आया? अब यहाँ पे अंडरलाइन करो फेयर एंड रीजनेबल, रीजनेबल एंड फेयर. तो ऐसा कुछ भी मेंटेनेंस नहीं, रीजनेबल और फेयर होना चाहिए. इज दैट क्लियर? तो 3 ही महीने में तुम 30 साल के पैसे मांग लो, तुम्हें फेयर तो लगना चाहिए ना. तो ये जो लॉ है इसको तुम घुमा सकते हो. ठीक है, अब इसमें लिखो इद्दत पीरियड को भी अंडरलाइन करो.
तो जो सुप्रीम कोर्ट का लॉ था या मैजिस्ट्रेट का लॉ था वो था थ्रू आउट लाइफ। अब इन्होंने उसको चेंज करके सिर्फ इद्दत पीरियड कर दिया, बट थ्रू आउट द लाइफ तुम इंस्टॉलमेंट में ले रहे हो, तुम चाहो एक साथ भी तो ले सकते हो। तो ये पर्टिकुलर लॉ इज वर्डेड इन सच अ वे दैट इट कैन बी सब्जेक्टेड टू टू डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस। ठीक है, अब इसको फर्दर क्लैरिफाई कर दिया गया इन डेनियल लतीफ़ी केस, बट इसका फर्स्ट प्रोविज़न ये है 3A। ठीक है, नेक्स्ट प्रोविज़न लिखो, फिर सेक्शन 3 सब सेक्शन 1B। इसमें है कि इफ चिल्ड्रन आर देयर, ठीक है, तो चिल्ड्रन के लिए भी मेंटेनेंस मिलेगा फॉर 2 years। तो चिल्ड्रन का भी सारा हिसाब किताब लिख के दे दो, ठीक है, इतनी आइसक्रीम पर डे, इतना ये, क्या नुकसान है। ठीक है, अब लिखो सेक्शन 1B, लिखो राइट, वेयर शी हरसेल्फ मेंटेन द चिल्ड्रन, वेयर शी herself maintains the children, woman herself maintains the children born to her before or after divorce, comma, a fair provision of maintenance to be made by the former husband for a period of 2 years from the respective dates of birth of such children. Next, section 1 subsection C. Next, husband has to give the complete amount of meher, M-A-H-R, meher, complete amount of meher or dower, D-O-W-E-R, dower, agreed at the time of marriage. Meher or dower agreed at the time of marriage. तो मुस्लिम मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट, तो एक मेहर या एक एग्रीमेंट, वो मनी भी देना है। हिंदू वाले में तो सब गोल कर सकते हो, यू अंडरस्टैंडिंग थिंग। तो यहाँ पे अच्छा खासा कानून है। नेक्स्ट लिखो, सेक्शन 1 सेक्शन 3 सब सेक्शन 1D, सेक्शन 3 1D पे हो, right, all property given to the woman in the marriage either by the relative of the woman or relatives of husband. ठीक है, अब नेक्स्ट लिखो सेक्शन 3 सब सेक्शन 2,
एक्चुअली ट्रिपल तलाक, पॉलीगैमी और निकाह हलाला, इस पर अगर जजमेंट आ जाएगा तो उसके बाद और कोई इशू चाहिए नहीं. इज दिस क्लियर? ये ऑलरेडी सही लॉ है. नेक्स्ट सेक्शन 3 सबसेक्शन 2A. ठीक है, इसमें राइट इन केस पेमेंट इज नॉट डन, पेमेंट इज नॉट डन in case husband doesn't give, comma, she can approach to the magistrate. Right, magistrate will find out the reason. अब नेक्स्ट लिखो सेक्शन 3 सबसेक्शन 3A. 3A लिखो राइट. व्हेन हस्बैंड हैज सफिशिएंट मीन्स, but has failed to pay. Sufficient means है but has failed to pay, comma, right, magistrate will direct the husband to pay the compensation. अब लिखो व्हाट कॉम्पनसेशन. राइट, राइट, विच इज फेयर एंड रीजनेबल एंड विच अलाउज वुमेन to live the same standard of life which she was living during marriage. Next लिखो section 3 clause 4. Section 3 clause 4. अब लिखो राइट इन केस husband fails to pay or pays only partially, comma, magistrate may send the person या may sentence the person for imprisonment which may extend to 1 year. तो that person can be sent to jail also. तो इतना तो काफ़ी है. और पार्शियल भी अगर पेमेंट किया तुमने, पूरा नहीं किया तो भी जाओगे जेल. और पूरा करना है, अब इसमें और भी बहुत सारे डिटेल हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है. एप्लीकेशन के ऑर्डर के विद इन 1 month में सब करना है. दिस इज़ द लॉ. तो इट इज़ ओके. स्टेट डज हैव इंटरफेरेंस. ओके. अब नेक्स्ट केस लिखो डेनियल लतीफ़ी केस.
Daniel Latifi case 2001. Daniel Latifi case 2001. या ये जो इम्प्रिजनमेंट है ये वेल्यूबल है ये अवेलेबल होगा ठीक है अब इतना लॉ नहीं अवेलेबल ही होगा ठीक है लेकिन जो मोदी जी लॉ लाएंगे वो अवेलेबल नहीं है ठीक है अब डेनियल लतीफ़ी केस इसका सिग्निफिकेंस क्या है डेनियल लतीफ़ी वॉज लॉयर ऑफ शाहबानो ठीक है ठीक है तो he appealed on behalf of Shah Bano against the Muslim Women Protection of Rights Act इस एक्ट के अगेंस्ट अपील की क्योंकि इसमें इद्दत पीरियड को लिमिट किया था और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था इट वाज अपील्ड दैट इट शुड बी रिवर्स्ड बैक एंड इट शुड बी अ मेंटेनेंस फॉर लाइफ ओके सो सुप्रीम कोर्ट हैज रिमूव्ड द लिमिटेशन of Muslim women protection of right iddat period okay so now Muslim women can receive maintenance even after iddat period now that is husband's choice he wants to give money lump sum या lump sum नहीं है तो पंजाब बैंक से ठीक है पंजाब नेशनल बैंक से भी तुम ले करके दे सकते हो और वो बैंक वालों को तुम जिंदगी भर दे सकते हो यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस तो अभी इसमें कोई मेंटेनेंस राइट की जरूरत है इट्स फाइन ना इट इज इनफ या तो सारी बातें आती नहीं ना पब्लिक में लोग उतना ही लिखते हैं जितना उनको फायदा है तो ये पूरे एक्ट को तो समझना पड़ेगा ना इट इज दैट्स वाई अब सेकंड क्या है अब लिखो डेनियल लतीफ़ी एक्ट केस राइट डेनियल लतीफ़ी वाज लॉयर ऑफ शाहबानो राइट challenged the validity of the act मतलब 1986 एक्ट राइट कौन सा एक्ट मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन वाला राइट पॉइंट नंबर 1 सुप्रीम कोर्ट हैज अपहेल्ड the validity of the act right next right however Supreme Court held that woman is entitled to maintenance even beyond entitled to maintenance even beyond iddat period ठीक है नेक्स्ट लिखो राइट मेंटेनेंस हैज टू बी फेयर एंड रीजनेबल ठीक है इट कैन बी डन इन इंस्टॉलमेंट और लंप सम LUMP लंप सम या तो एक साथ दे दो या धीरे धीरे करके तो इससे तुम्हें छूट मिल रही है और सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर देगा कितना पैसा देना है इज दिस क्लियर
Plus Supreme Court also said Muslim women have a right under section 125 of CRPC so long she is not being paid. अगर Muslim woman got the compensation, then her right does not exist. But अगर compensation नहीं मिला, तो even for Muslim women, section 125 of CRPC will apply. ठीक है? तो that right does not go automatically. It will apply for Muslim women if she does not receive the maintenance. Okay? Right? Right for Muslim women. Under CRPC, section 125 ends only when she has received fair and reasonable compensation as per section 3 of the Protection of Muslim Women Rights on Divorce Act. So now अब लिखो recent controversy या recent issue. अब सरकार फिर से बैठ के कोई नया मेंटेनेंस कानून बनाए, इसकी जरूरत है? यूनिफॉर्म सिविल कोड पर्सनल लॉ में मेंटेनेंस का बनाओगे, डाइवोर्स का बनाओगे, इनहेरिटेंस का बनाओगे, तो कहाँ कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है वैसे. हाँ, नहीं तो चिल्ड्रन का राइट होगा ना फादर की प्रॉपर्टी में. अब इतना मुस्लिम लॉ नहीं पता है व्हाट राइट व्हाट रॉट नहीं, तो अभी तो वुमेन स्पेसिफिक है. ठीक है, तो उसके लिए यू कैन डू थिंग्स इन अ कंपार्टमेंटलाइज्ड मैनर ऑल्सो वेयर यू सी द इनजस्टिस इज देयर. इज दैट क्लियर? अननेसेसरली पॉलिटिसाइज करने से कोई फायदा नहीं. तो नाउ दिस, अब लिखो ट्रिपल तलाक जजमेंट. ट्रिपल तलाक recent issue, ट्रिपल तलाक जजमेंट. ठीक है, so triple talaq judgment, it came on 22nd August 2017. 22nd August 2017. ठीक है, राइट. सुप्रीम कोर्ट dealt with five petitions on triple talaq filed in 2016. ठीक है, अब लिखो जजमेंट क्या था. जजमेंट, राइट, considered by 5 judges bench और 5 judges from 5 different religion लिए थे. ठीक है, हिंदू मुस्लिम सब, ऑल जजेस फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन, पारसी. ठीक है, जिससे कि कोई पार्शलिटी ये सब नहीं करे. तो 5 जजेस बेंच, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, and different judges
वेयर फ्रॉम डिफरेंट रिलीजियस बैकग्राउंड्स। इतना ड्रामे की जरूरत थी? जजेस पे ट्रस्ट नहीं कर सकते थे? थी जरूरत? नहीं, ज्यादा अच्छा क्या मतलब, यू शुड ट्रस्ट ना जज एज अ रैशनल पर्सन। हाँ, तो मतलब ये करना ऐसा गुड मैसेज तो नहीं जजेस। तो अब ऐसे तुम अगर कोई मुस्लिम वाला केस है तो क्या ब्यूरोक्रेसी में तुम मुस्लिम और ये ऑफिसर ऐसे 5 ऑफिसर लाओगे? आई डोंट थिंक ऐसा करना चाहिए था। ये कोई नथिंग टू अप्रिशिएट। यू शुड ट्रस्ट इन जुडिशरी। दिस शोज दिस इज नॉट, ये कोई सेंस नहीं है ना। लिखो जल्दी। एनीवे, अब लिखो जजमेंट। जजमेंट वॉज क्वाइट कॉम्प्लेक्स। जजमेंट वॉज क्वाइट कॉम्प्लेक्स। इसमें 2 जजेस, लिखो 2 जजेस found it unconstitutional. 2 judges found it unconstitutional and arbitrary. Arbitrary. वैसे यूएस में ऐसा होता है, यूएस में वाइट एंड ब्लैक दोनों पुलिस वाले एक साथ जाते हैं, ठीक है, टू अवॉइड एनी कंट्रोवर्सी। ठीक है, अब इसमें भी जो सिख, दैट वाज लाइक सीजेआई दैट टाइम, एंड मुस्लिम जज, दे डिडंट फाइंड इट अनइस्लामिक। अब हिंदू, क्रिश्चियन एंड पारसी, दे फाउंड इट आइदर अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अनइस्लामिक। ठीक है, तो इट्स सो मच गाइडेड बाई दिस। ऐसा कोई मॉडर्न बहुत सोसाइटी, मॉडर्न रैशनल कुछ है नहीं अपने यहाँ। ठीक है, तो 2 judges considered it arbitrary and unconstitutional. Next, 3rd judge called it un-Islamic and not the part of Shariat. अब इन्हें हाउ डू दे नो? ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ शरीयत और नॉट। ठीक है, आई थिंक इट वाज अ क्रिश्चियन जजमेंट। ठीक है, नाउ राइट द remaining two held that it is an integral part of personal law which is a fundamental right protected by the Constitution. ठीक है, right. However, these 2 judges laid down an injunction या order, INJUNCTION, injunction against the practice, injunction against the practice for 6 months. And directed the government to come up with the law by then. Six months में bring that law. ठीक है, तो अब what is, देखो what is the status of triple talaq? फर्स्ट, तो जजमेंट में था 3:2, ठीक है, राइट, मेजॉरिटी
judgment considered it unconstitutional ठीक है right next right it has been put on hold comma government has to come up with the law and till government does not come with the law injunction or prohibition will continue will continue ठीक है इसमें आप लिखो राइट ऐसे नोट करके राइट इवन अर्लियर इलाहाबाद हाई कोर्ट इन शमीम आरा केस Shamim Ara case had already declared triple talaq as unconstitutional. ठीक है तो कुछ नया नहीं हो पहले ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल था ठीक है अब लिखो राइट रिस्पॉन्स ऑफ द गवर्नमेंट ठीक है इसमें लिखो जजमेंट हैड क्रिएटेड कंफ्यूजन एज इफ हैड क्रिएटेड कंफ्यूजन एज इफ दैट सुप्रीम कोर्ट has directed the government to bring law. Right, this is how it was projected in media. Right, however, there was no such directions. ठीक है तो राइट गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड ट्रिपल तलाक बिल इन लोकसभा comma it remains pending in Rajya Sabha, comma, there is a demand to refer it to the select committee. अब लिखो what does it indicate? Right, right. There is no opposition to ban triple talaq as unconstitutional. मतलब across the parties all agree, जो भी major parties हैं, but there is a disagreement over the provisions of the bill. तो provisions of the bill अभी करते हैं तो पहला तो गवर्नमेंट ने ये काम किया. सेकंड लिखो सेकंड
government directed law commission to provide report on the Uniform Civil Code and its feasibility. आप लिखो, what are the problems in ट्रिपल तलाक बिल? So what are the problems in the triple talaq bill? So first of all, triple talaq bill is considered, triple talaq is considered as a crime. ठीक है? अब एक क्राइम है और वो कौन सा क्राइम है? नॉन बेलेबल, नॉन कंपाउंडेबल क्राइम है. ठीक है? अब नॉन बेलेबल है. अब तलाक तो तलाक है, तो फिर ऑल तलाक शुड बी क्राइम ना भाई. ट्रिपल तलाक इज ओनली क्राइम. तो मैरिज इज अ सिविल लॉ. मैरिज क्या है? इट इज अ सिविल लॉ. इट इज नॉट अ क्रिमिनल लॉ. क्रिमिनल एक्ट तो है नहीं डाइवोर्स. इफ अ समवन गिव डाइवोर्स टू द वाइफ, तो वो कोई क्राइम तो नहीं है. हैव यू अंडरस्टूड दिस? तो हाउ कैन यू ट्रीट ट्रिपल तलाक as a crime? Up making any law as a criminal law, there is some requirement. When it becomes a criminal law, where state is supposed to be the party. एक होता है law which is personal या civil law, which is limited to उसका impact 2 persons पर है, और ऐसा कोई action whose impact is on the entire society, तो उसमें state becomes a party and the law is criminal law. वो एक basis है. But ये तो relation between two individuals है. How does that impact the entire society that the government thought to make it a crime? वो भी कौन सा crime? Non-bailable crime. ठीक है? अब क्राइम के साथ साथ क्या है? द पर्सन विल बी सेंट टू जेल, और दैट पर्सन फ्रॉम ठीक है जेल विल हैव टू प्रोवाइड कंपनसेशन. ठीक है? तो जेल में वो काम कर करके, प्लस ट्रिपल तलाक इनवैलिड है, यानी कि मैरिज तो डिसॉल्व नहीं हुई है, तो जेल के बाद दैट पर्सन विल कम बैक टू हिज फैमिली. ठीक है? एंड विल लिव विद दैट वुमन हु हैज सेंट हिम टू जेल. इज इट पॉसिबल? मतलब ये किसी भी बेसिस पर दिस पर्टिकुलर बिल कैरीज नो सेंस. ठीक है? तो बिल इज व्हाट? इनको क्या करना था? ट्रिपल तलाक हैज नो लीगल वैलिडिटी. पॉइंट नंबर 1 मीन्स द लाइक मैरिज रिमेन्स एज इट इज. सो ट्रिपल तलाक, और बेसिकली विच इज कॉल्ड एज इंस्टेंट तलाक और तलाक ए बिद्दत, तो मैरिज रिमेन्स एज इट इज, नो इम्पैक्ट. इन केस the husband does not treat women well, so Muslim women can also take the recourse of the Domestic Violence Act. वो तो अभी भी है, तो इस पर्टिकुलर लॉ की भी कोई ज़रूरत थी नहीं. तो सुप्रीम कोर्ट ने तो डायरेक्ट कर दिया, उसकी भी ज़रूरत नहीं थी. इट इज़ इनफ. लॉ में बस इतना आना बहुत था कि दैट हैज़ नो वैलिडिटी. बट प्रोवाइडिंग दिस कंपनसेशन, मेंटेनेंस, अब जो लॉ वैलिड ही नहीं है, ठीक है, सो मैरिज पर कोई इफेक्ट ही नहीं है. मैरिज पर कोई इफेक्ट ही नहीं है, तो पनिशमेंट, मेंटेनेंस किस चीज़ का? ठीक है? तो दैट इज व्हाई दिस एक्ट
has been criticized. तो इस ये एक्ट किस फॉर्म में, अब what मोदी जी इज सेइंग, इट्स अ स्ट्रॉन्ग एक्शन, मतलब एक डेटरेंट एक्शन ले रहे हैं कि इतना स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट होना चाहिए दैट द पर्सन डज नॉट थिंक ऑफ गिविंग ट्रिपल तलाक. ठीक है, तो ये नौबत नहीं आएगी, ये सिर्फ डराने के लिए किया जा रहा है. ठीक है, तो ये कोई मैच्योर पर्सन वाली बातें लग रही नहीं लग रही. तो ये एक तरीके से इट कम्स आउट टू बी अ कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द मुस्लिम मेन. तो दैट सीम्स कि इट इज़ वेरी इलॉजिकल. ठीक है, तो क्या है, व्हाट आर द इन्फर्मिटीज और इलॉजिकल? राइट, फर्स्ट, ट्रिपल तलाक is void. Point number 1, triple talaq is void, means having no legal validity. Next, it means no impact on marriage. ठीक है, right. Next, right, however, it is considered as an offense which is cognizable, government will cognizable and non-bailable. Right, the punishment is imprisonment up to 3 years plus fine. Next, right, husband is supposed to provide subsistence allowance to the wife and children till he is serving in the prison. किसने ड्राफ्ट किया है बिल, और इनकी हिम्मत भी आ गई इंट्रोड्यूस करने की है. नेक्स्ट, लिखो. राइट, नेक्स्ट लिखो, द custody of minor children and other children will be with women. जेल में भेजना था इनको. ठीक है, will be with women. ठीक है, अब इसका क्रिटिसिज्म क्या है, लिखो क्रिटिसिज्म. right, when triple talaq has no legal validity, why punishment? So punishment. Next लिखो, right, giving divorce is not a crime. Everyone giving divorce goes to jail. ठीक है, giving divorce is not a crime. Next, 3-year imprisonment and fine goes against the principle of proportionality. Next, right, marriage is a civil contract
comma, between two persons, how can divorce becomes crime? Right? The basis of criminal law is that it impacts the entire society, and so a state has to be a party. Right, next. Because what was the better option? What was the better option? क्या? एंटी सेक्युलर ही है ये तो. पूछा भी ऐसे कुछ नहीं जाएगा, बट कभी किस चीज से किसका रिलेशन हो जाए इसलिए जानना जरूरी है. What क्या है? What is the better option? Right? First, it is enough to declare triple talaq void. Next, right, woman continues to have the right to live. Right to live within the home, या कह सकते हो within the family. Next, if she suffers from any physical, emotional, verbal insult or humiliation, she can approach to the magistrate under Domestic Violence Act 2005. Right? Magistrate has vast powers under the act. Magistrate can ensure the right of residence. Next, in case violation right of residence, मतलब women को निकाल नहीं सकते. Next, in case any sort of humiliation, the law prescribes for one year imprisonment and a fine of 20,000 rupees. ठीक है, तो इससे पर्पस सॉल्व हो जाता है. There was no need of making a separate this thing. So tomorrow also we will continue with this. Tomorrow there will be polity class. Monday I think geography class.